Alright, you can see over here that I'm done with my mood board, and let's discuss about our mood board. The theme remains the same, that is vengeance. और मूड बोर्ड और रिसर्च बोर्ड में जो डिफरेंस है उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज। रिसर्च बोर्ड जो है वो बेसिकली एक जनरल रिसर्च कंडक्ट की जाती है रिगार्डिंग आर थीम, तो व्हाट आर थीम इज़ बेसिकली अबाउट। मूड बोर्ड जो है उसमें थीम इट रिमेन्स द सेम, बट देयर इज़ अ डिपिक्शन ऑफ अ मूड जिसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। नाउ इन माई मूड बोर्ड माई मूड इज़ डिसेप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देयर इज़ अ लेडी ओवर हियर, शी इज़ होल्डिंग अ मास्क इन हर हैंड। नाउ दिस इज़ representing as her being a two-faced. Now there is another lady, there is another girl over here. She seems to be a successful woman, and her financial status seems to be pretty much high as well. You can see a villa in the background, you see gems over here. Then we have luxury items being over here. Now she is being a successful lady and being on the cover photo of different magazines. You can see it says best dressed, who's got style now. ठीक है, तो यहाँ पे जो है बेसिकली ये सारी चीज़ जो है वो दिखाई यही जा रही है कि शी सीम्स टू बी अ सक्सेसफुल लेडी, and her friend, she being as a two-faced and she is deceiving her friend. तो यहाँ पे जो है वो डिसेप्शन का मूड देखा जा रहा है। यू कैन सी अ चेस बोर्ड एट द बॉटम ऑफ दिस मूड बोर्ड, और यहाँ पे जो है दिस वन इमेज ओवर है की होल के अंदर से जो है दिस यू कैन सी द आई, समबडी इज़ पीपिंग इन, कोई झांक के अंदर देख रहा है। तो ये सारी चीज़ जो है, ये सारी डिपिक्शन जो है वो डिसेप्शन की है। तो यहाँ पे जो है वो डिसेप्शन के बारे में बताया जा रहा है। तो दिस इज़ आवर मूड बोर्ड, और मूड बोर्ड से रिलेटेड जो है आपकी अगर कोई और जनरल क्वेरी है तो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क मी। एक चीज़ और आपको मैं बताता चलूँ कि मूड बोर्ड के अंदर जो है आपने कोशिश ये करनी है कि you have to put less foreground images as possible. The more ladies you're going to put, or the more faces, or the more expression that you're going to put, so there can be a probability कि faces के अंदर जो है there can become a conflict in the mood. So make sure कि mood के अंदर जो है वो किसी किस्म का कोई conflict आपको ना देखने को मिले। तो दिस इज़ वेरी मच इट, हमारा मूड बोर्ड तैयार हो गया है, एंड दैट्स वेरी मच इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।